Assalamu alaikum. Today the topic of our discussion is the lateral ventricle. Lateral ventricle is the cavity of the telencephalon, and as you know, the third ventricle is the cavity of the diencephalon, the cerebral aqueduct is the cavity of the mesencephalon, and the fourth ventricle is the cavity of the rhomboencephalon. So lateral ventricle has basically divided into the parts. अब वो कौन से parts हैं? सबसे पहले it consists of the anterior horn, the posterior horn, the inferior horn, ये तीन horns हो गए. Then it consists of the central part, और central part के पीछे होता है the trigone. The anterior horn, the inferior horn, the posterior horn, the central part, and the trigone. This is basically the lateral ventricle. Now when we talk about the anterior horn is triangular and the smallest, and its roof is formed by the body and the trunk of the corpus callosum, the floor by the head of the quadrate and the rostrum, and the median wall by the septum pellucidum. This has been shown the anterior horn, cavity of the anterior horn of the lateral ventricle. So the median wall is formed by the septum pellucidum, the lateral wall is formed by the caudate nucleus, head of the caudate nucleus, and the roof is formed, roof, floor, and the median wall. Roof by the corpus callosum, floor by the caudate nucleus ka head, and the median wall by the septum pellucidum. Hence this is a cavity of the anterior horn of the lateral ventricle. Now this is the central part of the lateral ventricle. The central part of the lateral ventricle consists of roof is formed by the ऊपर तो हमें पता है corpus callosum ही जा रहा होगा. As we can see in this diagram, this is basically the thalamus. Thalamus के ऊपर हमारे पास ये जा रहा होता है basically the corpus callosum. Corpus callosum. This is the corpus callosum. कॉर्पस कैलोजम के आपको पता है पार्ट्स होते हैं कौन कौन से, जीनू होता है, स्प्लीनियम होता है. यहाँ से स्टार्ट करते हैं द रोस्ट्रम ऑफ द कॉर्पस कैलोजम, द जीनू ऑफ द कॉर्पस कैलोजम, देन दिस इज द बॉडी ऑफ द कॉर्पस कैलोजम, एंड देन एक्सटेंड द स्प्लीनियम ऑफ द कॉर्पस कैलोजम. यहाँ पे आए थैलेमस, थैलेमस के बाहर यहाँ पे आया द सी शेप कॉर्डेट न्यूक्लियस, द हेड ऑफ द कॉर्डेट न्यूक्लियस, द बॉडी ऑफ द कॉर्डेट न्यूक्लियस, इसमें कॉर्डेट न्यूक्लियस सी शेप जा रहा होता है. यहाँ पे पड़ा होता है पैराहिप्पोकैम्पल रीजन जो कि इस्थमस ऑफ द सिंगुलेट गायरस के थ्रू फिर पोस्टीरियरली कम्युनिकेट कर लेता है और वो सिंगुलेट गायरस बना लेता है और वो बेसिकली पार्ट होता है लिम्बिक सिस्टम का. और यहाँ पे एक डेंटेड गायरस आ जाता है. तो बेसिकली आई वांट टू टेल कि थर्ड वेंट्रिकल इज अ कैविटी ऑफ द डायएन्सेफेलॉन एंड द लैटरल वेंट्रिकल इज अ कैविटी ऑफ द टीलेन्सेफेलॉन. तो जो थर्ड वेंट्रिकल यहाँ पे लैटरल वेंट्रिकल पड़ा हुआ होगा उसकी रूफ कॉर्पस कैलोजम बना रहा होगा. सो सेंट्रल पार्ट की जो रूफ है दैट इज फॉर्म बाय द ट्रंक ऑफ द कॉर्पस कैलोजम एंड द मीडियन वॉल इज फॉर्म बाय द सेप्टम पेलुसिडम एंड द बॉडी ऑफ द फॉर्निक्स. मीडियन वॉल हमने पढ़ा था एंटीरियर हॉर्न के अंदर भी सेप्टम पेलुसिडम है मीडियन वॉल में, यहाँ पर भी सेप्टम पेलुसिडम है. रूफ में उधर भी कॉर्पस कैलोजम था, इधर भी कॉर्पस कैलोजम है. नाउ फ्लोर की बात करें तो फ्लोर में यहाँ पे आया था सुपीरियर सरफेस ऑफ द थैलेमस एंड द मीडियल कॉर्डेट. मीडियली और लेटरली इसको हम डिवाइड कर लेते हैं फ्लोर को. मीडियली लाइट कर रहा होता है सुपीरियर सरफेस ऑफ द थैलेमस एंड लेटरली बाय द कॉर्डेट न्यूक्लियस. मैं इसको आपको डायग्राम से दिखाता हूँ. लेटरल वॉल इसकी नहीं होती और ये रूफ एंड फ्लोर जो है ना वही मीडियली जो रूफ एंड फ्लोर जो मीट कर रहे होते तो वही उसकी बेसिकली लेटरल वॉल बन जाती है. तो दिस वॉज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द लैटरल वेंट्रिकल, सेंट्रल पार्ट ऑफ द लैटरल वेंट्रिकल जिसका हमने रूफ पढ़ा, फ्लोर पढ़ा और मीडियन वॉल पढ़ा. लैटरल वॉल इसकी बेसिकली एज सच नहीं होती, रूफ एंड फ्लोर की मीटिंग से वो बनती है. तो मीडियन वॉल दोनों की सेप्टम पेलुसिडम है, रूफ पे दोनों पे कॉर्पस कैलोजम लाई कर रहा है. नाउ आई विल शो विद द डायग्राम. This is basically the diagram showing the anterior horn of the, sorry not anterior तो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, the central part of the lateral ventricle. So अब देखें this is the central part of the lateral ventricle as labeled. Now इसकी क्या क्या बाउंड्रीज आ रही हैं. Roof is formed by the corpus callosum, the median wall by the septum pellucidum, and the floor has been divided into medially and laterally. Medially by the superior surface of the thalamus, or basically आप thalamus कह दें. Medially the floor by the thalamus and laterally by the caudate nucleus. In between the caudate nucleus and the thalamus, there lies two structures, the stria terminalis laterally and the thalamostriate vein medially. Hence, these is the boundaries of the central part of the lateral ventricle shown by the diagram. Now we talk about the posterior horn. The posterior horn, basically the roof and the lateral wall are formed by the tapetum of the splenium, while the median wall consists of the two elevations. The uppermost elevation is by the bulb of the posterior horn, and we have studied the bulb of the posterior horn is formed by the projecting fibers made by the forceps major. Forceps major basically वो fibers extend कर रहे होते हैं from the
कॉर्पस कैलोजम एंड पोस्टीरियरली इन द ऑक्सीपिटल लोब, उसको हम कहते हैं फॉर्सेप्स मेजर। तो फॉर्सेप्स मेजर के अंदर एक बल्ब ऑफ द पोस्टीरियर हॉर्न बन रहा होता है। तो अपर मोस्ट पार्ट मीडियली वॉल का बाय द बल्ब ऑफ द पोस्टीरियर हॉर्न एंड द लोअर एलिवेशन इज द calcaravis. The calcaravis is formed by the calcarine sulcus in the occipital lobe. ये भी हमने पढ़ा था कि occipital lobe के अंदर एक visual cortex होता है, visual area होता है, visual association area होता है, जिसमें calcarine sulcus होता है। तो वो भी occipital lobe के अंदर था। तो lower elevation भी occipital lobe के अंदर called as calcaravis, formed by the calcarine sulcus in the occipital lobe, and the upper most जो elevation होती है, that is the bulb of the posterior horn by the forceps major, and these are also extending in the occipital lobe. अच्छा, टेप्टम बेसिकली क्या होता है? टेप्टम इज बेसिकली अ शीट ऑफ वाइट मैटर फाइबर्स। ये आपको शो कर रहे हैं द शीट ऑफ वाइट मैटर फाइबर्स फ्रॉम द स्प्लीनियम ऑफ द कॉर्पस कैलोजम। दिस इज बेसिकली द टेप्टम दैट इज फॉर्मिंग द पोस्टीरियर हॉर्न की roof and the lateral ventricle septum from the splenium of the corpus callosum. Now I will show it with a diagram. यहाँ पे ये देखें forceps major भी शो किया हुआ है। This is a septum that is forming the पोस्टीरियर जो पोस्टीरियर हॉर्न है ना, उसकी रूफ एंड द लैटरल वॉल, और जो मीडियल वॉल है उसमें अपर मोस्ट पार्ट की जो एलिवेशन आ जाती है बाय फॉर्सेप्स मेजर से बल्ब ऑफ द पोस्टीरियर हॉर्न, और जो लोअर एलिवेशन होती है वो होती है बाय द कैल्कराइन सल्कस से कैल्कराविस। इसको मैं डायग्राम से शो करता हूँ अब। This is in this diagram, this have been shown that this is a cavity of the posterior horn. The cavity of the posterior horn is bounded laterally, the roof and the lateral wall by the tapetum. This is a tapetum. T-A-P-E-T-U-M, tapetum. These are basically the white matter fibers extending from the splenium of the corpus callosum. तो ये हमने रूफ और लैटरल वॉल देख ली। अब हम देखते हैं इसके फ्लोर। द फ्लोर इज फॉर्म्ड बाय द टू एलिवेशंस। कौन कौन सी? टू एलिवेशंस जो हैं वो अपर मोस्ट पार्ट में बन रही है बाय द फाइबर्स ऑफ द फॉर्सेप्स मेजर से बन रहा होता है बल्ब ऑफ द पोस्टीरियर हॉर्न, और फॉर्सेप्स मेजर के फाइबर्स कहाँ एक्सटेंड कर रहे होते हैं? पोस्टीरियरली इन द ऑक्सीपिटल लोब, उससे बन रहा होता है बल्ब ऑफ पोस्टीरियर हॉर्न, और एक कैल्कराइन सल्कस लाई कर रहा होता है इन द ऑक्सीपिटल लोब, जिससे जो प्रोजेक्शन बढ़ती है दैट इज कॉल्ड कैल्कराविस और कैल्कराविस। ये दो प्रोजेक्शन बनी है। अपर वन इज द bulb of posterior horn and the lower one is the calcaravis. Bulb of posterior horn by the fibers of the forceps major and the calcaravis by the calcarine sulcus. So this was the diagram of the cavity of the posterior horn of the lateral ventricle. Now we move towards the inferior horn. The inferior horn is formed by the roof, or the lateral wall is formed by the tapetum, again same, and the medial wall by the tail of the choroid nucleus and the amygdaloid nucleus. And floor is अच्छा, फ्लोर के अंदर मेनली जो चीज़ याद रखनी है दैट इज द हिप्पोकैम्पस एंड द एल्वियस। द एल्वियस इज बेसिकली द एक्सटेंडिंग द वाइट मैटर फाइबर्स फ्रॉम द हिप्पोकैम्पस। दिस इज द डायग्राम शोइंग द inferior horn of the lateral ventricle. So here you can see the roof at the lateral ventricle is formed, the roof and the lateral wall is formed by the tail of the choroid nucleus and the tapetum, while the floor is formed by the hippocampus, और इससे निकल रहे होते हैं फिम्ब्रिया, और मैंने आपको बताया द एल्वियस, द एक्सटेंडिंग द वाइट मैटर फाइबर्स, एंड द मीडियल वॉल पे आ जाते हैं। यहाँ पे पाया मैटर पड़ा हुआ होता है, और इसी तरह ये इसमें स्ट्राटा टर्मिनालिस शो किया हुआ है। तो रूफ एंड द लैटरल वॉल बाय द टेल ऑफ द choroid न्यूक्लियस एंड द tapetum, and the floor by the hippocampus and the alveus. And a roof or the lateral wall by the tail of the choroid nucleus and the tapetum, the floor by the hippocampus and the fimbria, and the medially here lies the choroid plexus or the pia mater की foldings, or this side is a medial wall, and this is the lateral wall by the tapetum and the tail of the choroid nucleus. So this is a diagram showing the inferior horn of the lateral ventricle.